प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ उपासना, उपासना का महत्व, ये हमने कल उनका थोड़ा सा पढ़ा। उप यानी नजदीक रहना, उप मीन्स proximity, आस मीन्स टू बी, अस और आस यू कैन से is to be. So to be in proximity is the meaning that comes across. And then she explained that living in the so why do we, हाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन इस बात का दिया उन्होंने। उपासना क्यों जरूरी है? आप समझ गए ब्राह्मण है, हम समझ गए हैं कि सब कुछ ब्राह्मण है एंड एवरीथिंग इज एनर्जी। वी हैव इंटेलेक्चुअली अंडरस्टूड इट एंड एवरी ब्रांच ऑफ योगा टॉक्स अबाउट उपासना। और ये उपासना सब कोई भी मार्ग ले लो आप, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, योग, वट एवर, एनी कोई भी मार्ग ले लो आप, लेकिन हर मार्ग में उपासना क्यों देते हैं? करने की जरूरत ही क्या है? जबकि हम समझ गए हैं कि ये ब्राह्मण है और सब कुछ ब्राह्मण की वजह से है, हम ब्राह्मण की वजह से है। हमने वो इच्छा भी छोड़ दी है ना, ऋषि पुत्र कहते हैं, वो कहते हैं ना क्या, इच्छा करना भी अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। तो वो भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग में रुकावट बनेगी। इट विल बिकम, इट विल रेस्ट्रिक्ट यू इफ यू एक्सप्रेस अ डिजायर टू एक्सपीरियंस द ब्रह्मन। एंड नाउ यू हैव एक्सप्लेन्ड why there cannot be a point in the desire to experience the Brahman, because you don't experience it. It is not an experience, it's a happening which is by its grace, the Brahman's grace. वो ब्राह्मण जब चाहता है वो खुद को रिवील करता है, हम कुछ नहीं कर सकते ब्राह्मण का उसकी किनार को छूने के लिए। तो वो जैसे बिजली चमकती है और सब कुछ स्पष्ट दिखता है, अचानक ब्राह्मण खुद को दिखा देता है और हमको उसका एहसास हो जाता है। उसके बाद अगर उसको याद करने की हम कोशिश करते हैं, थोड़ा सा कल और परसों का रिविजन चल रहा है, उसके बाद उसको अगर हम याद करने की कोशिश करते हैं तो ये इसलिए है क्योंकि दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अवर माइंड टू रिमेम्बर। तो वो जो स्मृति, लेकिन स्मृति जो है, ये जो हैपनिंग था, जो अकरेंस था, उसको उसको एक एक्सपीरियंस में बदलने की कोशिश करती है। और ये मन का स्वभाव है, ये मन का गुणधर्म है। इट इज द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द माइंड। द माइंड वांट्स टू say that I had the experience. So the mind, when it gets converts it into the experience, then only it can say that I had the experience. सही बात है कि नहीं? So this is the part, and you especially which you missed out on yesterday, which was very beautifully explained, that don't do that. Don't try to recall your experience, remember your experience, relive the experience in your imagination. You know why? Because reliving and all that, it will become a delusion. You will get deluded. And so it's not a great idea to talk also about it. जिस बात का सोचना भी नहीं है, तो बात करने की तो दूर की बात है कि भाई मैं आत्म साक्षात्कारी हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ था, मैंने वननेस का एक्सपीरियंस किया था, ऐसा लग रहा है कि ये है वो है। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट, because talking about it makes it a delusion, makes it, you're trying, the mind is trying to convert it into an experience for remembrance sake, which is not a good thing to do. Then what to do? So अगला सवाल ये था, तो क्या करे? उस वो जो अवेयरनेस है, द अवेयरनेस ऑफ द ब्राह्मण, वो ब्राह्मण के अवेयरनेस में रहो। अगर तुम्हें आत्मा साक्षात्कारी अनुभव हुआ है, if the Brahman has revealed itself to you, then
Just be connected to it by all Abide in it. the time. Yes, abide in it. Yes. Bilkul. Stay with it. Abide in it. All the time, remember it. Not remember it, but all the time, stay in awareness of the Brahman. Do whatever you are doing, live whatever you are living in awareness of that cosmic consciousness, of that Brahma. That is what we need to do. But, but it is very difficult for us to do that. And that is why we need to do the upasana. Upasana. Okay, upasana, upa, nazdik, asa, hona. नजदीक होना, उसको ऑल द टाइम उसके नजदीक रहने के लिए जो करना कर सक, जो भी उसको जहन में रखने के लिए वो रखना, ऑल द टाइम रखना. क्यों? क्या होता है? यू नो व्हाई वी कांट डू इट, व्हाई वी कांट सस्टेन इट, व्हाई वी कांट keep remaining in awareness of the cosmic energy of that experience of the Brahman all the time. You, because that was the last point that we discussed yesterday, because we live in duality. Life is duality. Life itself is Advaita. But हम जो जी रहे हैं ये द्वैत है. हमारे यहाँ सुबह होती है, शाम होती है, अंधेरा होता है, दिन होता है. तो ये इसमें से हम नहीं निकलते. तो इसमें रहते हुए उपासना करना यानी उस ब्रह्मन की याद में जिंदगी बिताना, द्वैत में अद्वैत के साथ रहना. Is that clear? Any questions? Right? Is it clear? Yeah. So that was the last thing she said. So living in the Okay, condition. here. Yeah. Tell me. Okay. I just wanted to share with everybody Hmm. that even Swamiji mentioned the same thing. Ki Hmm. we keep on expecting that experience or that happening to happen again and Again. again and again. Yes. Bilkul. And because of that, the mind becomes again agitated and we go back to the same old rigmarole. So, Yes. usse acha, just be. And if that happens, try to abide in it for a longer time. Correct. Abidance is the most difficult thing Yes. in this path, Yes. abiding in the self realization. And Yes. another thing, I just wanted a clarification from you, Yes. Yes. Aarti. Usually, these self realized masters, I have, at least I have not heard of anybody saying that they are a self realized person. But do Um, they do that? I just wanted to clarify this I point. think so. I think so. Because why? I'll tell you why I think so that they do that. Because they try to speak about that. They try to put it in words. They try to tell you, you know, what happened in that moment. And it's not about just the Indian masters. So, like, even we have like David Hawkins, there are so many other people who have written such fantastic books. They, after going through such an experience, Hmm. okay, they have written that creativity, the writing of such books itself, such a huge power. Where did it come from? It came from that experience. But they always begin their when they start talking about themselves, they begin by describing or trying to describe that happening, that occurrence which happened. Hmm. All right. But they don't directly mention it. No, The no, you they might conviction not with which use. they write or the conviction with which they talk, that I think will be the proof that they have gone through the experience. Yes, That's my take. That is my yes, take. Okay. Uh, absolutely right. So that it's not, I'm not saying they're doing wrong. I'm no, they're not just, doing wrong. they're not Hmm. doing wrong. Okay, there's no right and wrong in spirituality. Absolutely. In this Basically, no mark, right so and there is no right and wrong. each one has a certain level of understanding, and that's it. All right, everything is right over here. What I mean, what here she was elaborating for almost 2 pages, you know, Vimlaji, that when you try to put something into words, you are limiting it. Yes, yes. And who puts it? She has specifically said here, who puts it in? Where does the words come from? It's your thoughts. Where are the thoughts originating? In the mind. Hmm. The mind itself Yes. is a limited thing. Itself is an illusion. So the mind becomes the
then by trying to put or describing what happened, what is happening is the mind is putting you into a delusion. Now, maybe the masters that you and me probably are talking about, who have described or tried to describe, they just want to tell us that look, it can happen. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये अपने फायदे के लिए कुछ बोल रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं हमें कि देखो हमारे साथ हुआ, तुम्हारे साथ भी हो सकता है. They are inspiring us. They are, trying to tell us that please keep meditating. It will happen someday. All right. So it might, their intention might be something different. But you and me, we are sansari log, right? We are not any masters who are running an ashrama or organization or a spiritual cult or outfit or whatever it is. We are none of that. You and me, when we have this experience, and we do have this experience, we might sometimes just have a shadow of that experience. I don't want to call it experience. We might have pass through the shadow of that happening or that occurrence. We must try to remain with it. Like you said, abide in it. Yeah, this is an indication for us that why upasana is necessary. Why is the Rishi over here saying Tadvanamiti upasitam? Why is the Rishi saying that? The Rishi is saying, she telling the students, if and when that happens, you can't make it happen. It will happen when the grace is there. When the Brahman's grace, when the Brahman decides to grace it upon you, it will reveal itself. When it happens, what do? Please don't start celebrating. Because who started celebrating? Agni Dev, Vayu Dev, all the Devatas began celebrating, which was an illusion, which was a delusion. All the energies of the organs and their energies and the elements, they started celebrating. Was it the truth? It wasn't Sat. It wasn't the truth. So don't start celebrating. Don't be overwhelmed by it. Because that's not the end of it. There is a lot. Patanjali would say, Abhi Dilli dur hai. अभी बहुत आगे जाना है. सेलिब्रेशन करने का मतलब होता है रुक गए. सेलिब्रेशन कब होता है? किसी चीज के अंत में सेलिब्रेशन. तो उस चीज के साथ रहो. You have come from the lower consciousness to the higher consciousness. Through our meditations, we will reach this higher consciousness. And once we are at the higher consciousness, we must try to maintain that higher consciousness by remaining in awareness of the cosmic energy all the time. So this is I take this personally. Whatever she is saying, I take it personally that she is telling me that if and when and whatever meditations we do. Yes, Suchitra. Yes. So yes, and thanks Sanju for bringing this up, because really, like Suchitra is saying, that it brings clarity to the mind. So हर एक चीज linked है. She might take up one topic and the other, but we have to round it off. We have to understand, okay, why am I doing this? Okay, what's the reason behind this? Okay, so what is happening? So who is doing it? And now what should I do? ये होना चाहिए. Yeah? Wonderful. Chalo, My takeaway from Kenopanishad was like, it helps me to backtrack. Yeah. Backtrack, and go right till the source. Yes. It is so beautifully explained in Kenopanishad, very beautiful, very this Upanishad. I mean, every Upanishad is yeah. Yes, it's so beautiful. It's a gem. Every one of them is a Even gem. But Ishavasya talks about karma and upasana so beautifully. Yes, it The does. last few verses are only karma and upasana in Isha. Very nice. For a human being, for a jivatma who is living in duality, we don't have an option to upasana. Correct. Because we are living in duality, we have to remember the indivisible. We have to remember that one. Yes. उस एक सच्चित को तो ध्यान में रखते ही जिंदगी जीनी है, जो भी करना है, याद रखना. And see, and even Adi Shankaracharya, when we see, he was a propounder of Advaita Vedanta. Yes. But still, he founded so many temples. He founded so many mathas. Why? Because for a common man,
to study about the Ekameva Advitiyam is very difficult. yes. बट उस सीढ़ी चढ़ने के लिए ये उपासना, ये टेम्पल्स, ये मठास, ये पूजा रिचुअल्स बहुत पाठ जरूरी है सब फॉर जरूरी चित्त है। शुद्धि, यस, ओनली फॉर चित्त शुद्धि। यस। एक बार चित्त शुद्धि एंड चित्त एकाग्रता आ जाएगा, हम्म, देन टू टेक द लीप अपवर्ड्स विल बिकम इट्स इजी। यस, वेरी ट्रू। And then our mind, no, our minds are limited, यस, so they need something to hold on to. So those एब्सोल्युटली। temples or those idols, they become a focal point. At least धारणा तो हो ही जाती, यस यस। ज्ञान तक भी हम चले जाते हैं। हाँ, बाद में हमको इन चीजों का आधार छोड़ना पड़ता है, अगर हमको सम आदि में रहना है तो, if we want to stay in that sum. So that's what the last sentence that we read yesterday. So living in the conditioned, limited world, physically, biologically, psychologically, operating or functioning through various limitations and conditionings, we are conscious of the duality, the subject and the object. And that is why we need to do the upasana. That was the last thing we read. Alright, वहां पे बात खत्म नहीं हुई थी. Playing various roles while living. So now she wants to talk a little about हम जी रहे हैं, right? जिंदगी चल रही है, हमारा जीवन फंक्शनिंग है. तो ये जीवन क्या है? Living is relating. Some तीन शब्द, लेकिन जैसे I love you कैसे मतलब से भरा हुआ है, वैसे ये कोई कोई सेंटेंसेस. लिविंग इज रिलेटिंग, लिविंग इज रिलेशनशिप, एंड दैट इज अ गेम वी प्ले all our life on the level of psychological and physical existence. मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पे संबंध बनाते हैं. वस्तु, व्यक्ति, विषय, हर चीज के साथ संबंध बनाते हैं, और इसी को जीवन कहते हैं. I use the word we play the game. If you don't mind, may I give an illustration? मैं एक example देना चाहूंगी, अगर play the game कह रही हूं मैं तो. You might have participated in plays and dramas in your school or college days. I have done it in school days and college days in acting plays. And you play the role of the king, the queen, the villain, the hero, the heroine. You play the role and you have to play it perfectly. You have to put all the excellence of your talents into that game of playing the role. स्कूल कॉलेज में हम सब ने या कईयों ने हमने नाटक में पार्ट लिया होगा, नहीं लिया है तो देखा तो जरूरी होगा. जो भी प्ले, जो भी रोल हमको खेलना है, चाहे हम राजा हो, रानी हो, विलेन हो, हीरो हो, हीरोइन हो, देखो उसका पूरा कॉस्ट्यूम, उसका बॉडी पोस्चर, सब कुछ परफेक्टली हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है ना. तो एक राजा कैसे बैठेगा, एक रानी कैसे बिहेव, वॉट एवर रोल जो हम खेलने वाले हैं, वो रोल का पूरा गेटअप हमें बनाना पड़ता है, राइट. सो यू हैव टू पुट ऑल द एक्सीलेंस ऑफ योर टैलेंट्स इनटू दैट गेम ऑफ प्लेइंग द रोल. फिर आवाज बदलनी होती है, फिर डायलॉग्स उस तरह से बोलने होते हैं. क्या हम होते हैं? नहीं. क्या होता है, हम वो बन जाते हैं. Inwardly, you are aware that you are neither the hero nor the heroine, neither the prince nor the pauper, and yet, based on the awareness of your own separate identity, you still play the role. जब तुम वो राजा, रानी, जो भी पोस्टमैन, जो भी रोल खेला होगा, जब तुम वो बने थे, या गुड़िया बने होंगे, या कठपुतली बने होंगे, कुछ भी बने होने, झाड़ बने होंगे अगर आप बहुत छोटे हैं तो, या कोई प्राणी बने होंगे, क्या कभी भी आप भूल पाए कि आप नहीं हो? Did we ever forget that we are not who we are? No. So we remember who we are, and yet we are playing that role to the perfection. जो भी रोल हमको बोला है, भाव भाव करना है या वाव वाव करना है, जो भी करना है, हम वो सब वहां पे उस रोल में करते हैं. Maybe that role is played for 3 hours, and here this acceptance of duality, which is a relative fact, acceptance of the relative fact, imagining it to be absolute fact, we play the game of human life, take upon ourselves so many roles, and we discharge them between man and woman, between individual and society, between human beings and non-human species, between the individual and the cosmos.
बस उसी तरह ये जिंदगी का खेल हम खेलते हैं। वही द्वैत जो है, ये द्वैत का स्वीकार करते हुए हम हर चीज के साथ, ये खेल खेलते वक्त हर चीज के साथ संबंध बनाते जाते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, तो ये मनुष्य का मनुष्य तत्व जो है, एज अ ह्यूमन वी ट्राई टू बी एज ह्यूमेन एज पॉसिबल. We try to remain in the humanity of our humanness, and we try to play the role of a human to perfection. तो हमारा खुद के साथ एक नाता है, स्त्री और पुरुष का एक नाता है, मेरे अपना और समाज में जो भी कुछ है उसका नाता है, मनुष्य और बाकी के जो प्राणी पक्षी पर पशु जो भी है उनके साथ एक नाता है। ये सारा नाता और हमारे और ब्रह्मांड के बीच में एक नाता है। हर नाता को हम निभाते हैं, हर रिलेशनशिप को हम निभाने की कोशिश करते हैं, between us and that cosmos, between us and the society, between us and the others, between living and non-living, yeah, all of it. So there is the beauty and also there is the grandeur. We never ever forget we are playing the human game. Social level, economical level, physical level, mental level, emotional level. मैं माँ बनती हूँ, माँ के रोल में अगर उस सीन में रोना है तो रोती हूँ, प्यार करना है तो प्यार करती हूँ, जो भी वो करना है सब कर रही हूँ, लेकिन वो क्षणिक खेल है, मैं एक रोल निभा रही हूँ। ये अगर याद रखते हैं हम, और हर वक्त मैं हूँ कौन, तो मैं हूँ आत्मा। कौन आत्मा? जो ब्रह्म का हिस्सा है, या जो ब्रह्म आत्मा, ब्रह्म का ने मेरे शरीर का रूप धारण किया और आत्मा बनकर मेरे अंदर जो है वो मैं हूँ। और बाकी जो भी कुछ है वो सब मेरे रोल से, एक ड्रामा है, लाइफ इज अ ड्रामा एंड वी आर जस्ट बस एक एक रोल निभा रहे हैं हम। यही उसका सुंदरता है और यही उसका ग्रेटनेस है। यू रिक्वायर ट्रेमेंडस स्किल। अब क्या होता है, कभी कभी ड्रामा इतना रियल लगता है। मैंने एक्चुअली आई हैव फॉर क्वाइट सम टाइम इन माय यूथ आई हैव वर्कड इन प्लेस एंड मतलब जो प्रोफेशनल नाटक वगैरह हुआ करते थे ना, तो मैंने देखा है, पता है, हाउ पीपल गेट लॉस्ट इन द रोल और वो सच में रोने लगते हैं और इतना भर आता है कि वो टूट जाते हैं वहां पे, बिखर जाते हैं। ये भी लोगों के साथ होते हुए मैंने देखा है कि वो रोल में से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दे गेट दोज हु आर वेरी डेडिकेटेड प्लेयर्स ना, so they cannot forget, they become that thing and they literally try to, तब जाके वो ऑथेंटिसिटी भी आती है रोल को। लेकिन ये डेंजर है कि भूल जाते हैं कि वो खुद कौन है और सिर्फ एक रोल खेल रहे हैं, ये भूल जाते हैं। So you require tremendous skill to operate and function through the limited sense organs and the conditioned psychological structure. अब जब बचपन से मुझे बताया गया है तुम्हारा नाम ये है, तुम एक स्त्री हो, फीमेल हो, और तुम ये समाज का हिस्सा हो, या इस कुटुंब, इस कम्युनिटी का तुम एक हिस्सा हो, तो इतना वो रोल में मुझे ढाला गया है, या मैं कहूँ खुद को मैंने इतना वो रोल में ढाल दिया है। तुम माँ हो, 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 गर्भधारण से लेकर तो वो मेरा बच्चा 21-25, हमारे यहाँ 21 साल पे कुछ नहीं होता, 25-26 साल का हो जाता है, तब तक इतना परफेक्टली हम वो माँ का रोल खेलते रहते हैं कि भूल जाते हैं कि मैं एक माँ नहीं हूँ। मैं इस बच्चे की केयर टेकर हूँ, रखवाली हूँ, अब मेरा रोल खत्म हुआ और वो रोल छोड़ना नहीं चाहते। हम उस रोल को हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको खेलते ही रखना है हमें। व्हेन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज, सो बहुत मुश्किल है। हमारे जो ऑर्गन्स है, हमारे जो इंद्रिय है, इतना सीमित इंद्रिय, और हमारा जो माइंड है जिसको एक कंडीशनिंग, जिसपे संस्कार किया हुआ है, एक प्रकार का संस्कार है, डाला गया है मन पे, उसके बाहर ऑपरेट होना हमको बहुत मुश्किल हो जाता है।
If you are aware that the duality generated by the limited sense organs and the conditioned psychology are not the ultimate reality. लेकिन अगर मैं याद रखूं, मैं हमेशा से खुद को बोलूं कि ये मैं हर मतलब आई एम नॉट परमानेंटली अ डॉटर इन लॉ, आई एम नॉट परमानेंटली अ डॉटर, आई एम नॉट परमानेंटली अ मदर, आई एम नॉट परमानेंटली अ टीचर. None of this is permanent. Or what is permanent? My existence, consciousness. If you remain with that I am asmi, aham brahmasmi, who am I am that Brahman, I am the pure consciousness. अगर ये हम ख्याल में रखते हैं तो ये रोल में कहीं खोएंगे नहीं. If we remember that we are not the ultimate, the conditioned psychology are not the ultimate reality, if you are aware that the indwelling essence, the indwelling reality in every expression of life is the same, then you become aware of the unity of life. You become aware of the foundation of non-duality on which the game of duality is played. रंगमंच को नहीं भूलना. जिंदगी एक रंगमंच है. सुचित्रा knows that dialogue better than me. Yeah, and you are playing a role. We are playing a role on it. Never forget the stage. हमारा होता क्या है, हम स्टेज पे खड़े हैं ये भूल जाते, right? We forget that we are playing a role, and then we get involved into the whole drama of life. So that's what she's saying over here. I hope you have been sitting on the banks of some river or sitting on the beach of some ocean, and you see the movement of water on the breast of water. You see drops. You call it a drop because of its shape, a bubble. But what will happen if you touch it? जो आकार, बूंद ना, पानी की बूंद हम कहते हैं, बूंद जैसा उसका आकार है, इसलिए हम उसको बूंद कहते हैं. और अगर वो समुंदर किनारे, वो अगर लाइक अ बबल व्हेन इट कम्स अप, अगर उसको तुम छुओगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ यू टच इट? इफ यू टच द बबल, you don't get the bubble. You touch the water because it is made up of water. तो वो जो बूंद जिसको तुम पानी की बूंद कह रहे हो, वो बूंद नहीं है, वो पानी ही है. बूंद का आकार है, लेकिन है क्या? वो है पानी. अगर उसको हम छूते हैं तो हमारे हाथ को क्या लगेगा? पानी का गीलापन, पानी ही लगेगा. You see ripples, you may see big waves, and if you try to take into your hands a handful of waves or ripples, what will happen? हमें ये दिखती है, पानी की धाराएं दिखती है, या हमें समुन्दर की लहरें दिखती है. ये लहर को अगर तुमने हाथ में उठा लिया तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यू विल हैव ओनली वाटर इन योर हैंड्स. क्या है हाथ में? पानी ही है. चाहे बूंद ले लो, चाहे लहर ले लो, है क्या हाथ में? पानी. वाटर इज द फाउंडेशन. क्योंकि आधार क्या है? पानी, जल, यही उसका आधार है. द ओशन, द रिवर इज द फाउंडेशन ऑन विच bubbles, drops, ripples, the waves, they carry on their dance. पानी के बुड़बुड़े होते हैं, पानी सब कुछ होता है, बट आखिर है क्या? आखिर तो है वो पानी. तो पानी उसका आधार बनता है. The waves carry on their dance. That is why our friend Fritz of Capra calls it the dance of the Shiva, the dance of innumerable energies on the breast of unity of life. जिंदगी एक अद्वैत है. जिंदगी एक है, उसके स्तन पे ये सारा ड्रामा चल रहा है, ये सारा खेल उसके ऊपर चल रहा है. राइट? द डांस ऑफ अनेक ऊर्जाएं हैं. ये सारी ऊर्जाएं अपने अपना काम, अपना अपना नृत्य, वो नृत्य जैसा लगता है. सी, बिकॉज इट्स ऑल इन कोऑर्डिनेशन. हाँ, हमारी सीमित आंखों से हम देखते हैं, सीमित दृष्टि से दिखता है, हमें बड़ा पिक्चर नहीं दिखता और इसलिए हम पहचान नहीं पाते. बट एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड. Life is perfect. Life is complete. Absolutely, without a second.
All right, that we have to remember. The dance of innumerable energies on the breast of unity of life, on the breast of the non-duality, the dance of manyness. वो एक पे अनेक जो है वो अपना खेल कर रहे हैं, लेकिन वो सारे अनेक जो है वो कहाँ पे हो रहा है, ये उनका सब खेल कहाँ हो रहा है, उस एक पे हो रहा है. द्वैत का खेल अद्वैत पे हो रहा है. On the breast of that non-duality, the dance of manyness, the dance of many innumerable energies playing with one another, acting upon one another, generating all different energies. It goes on and on and on. Right? जब ये ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती है, तब कुछ ना कुछ तो परिणाम होना है ना? तो एक नया कुछ तैयार हो जाता है जब ये ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ इस तरह से. द क्रिएटिविटी इज एंडलेस, द प्रोडक्टिविटी इज एंडलेस, असीमित, अनलिमिटेड. सो now what do I do with this mind? Because it's the mind which is creating all these delusions and illusions, and the mind which is getting lost in the drama of life, and the mind which keeps forgetting, that it is not the whole and soul. It rests upon something. Consciousness is the basis of it. वो भूलता है, तो let mind be in a meditative state. तो क्या करे? मन को हर समय एकाग्र चित्त, तो चित्त भूमि जो हमारी है एकाग्र और निरुद्ध के में रखना है. मूढ़ क्षिप्त विक्षिप्त से उठ जाओ, सत्व में आ जाओ. रजतम सत्व का त्रिगुणों का बहुत खेल हो चुका. Just become concentrated, focused, ekagra chitta. So the teacher now is helping the students and persuading them to be in a meditative state. किस पर एकाग्रता करनी है? ब्रह्मण पे, जो कैसा है? निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ. तो ऐसे पे वो मन को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए अलग अलग उपाय हम करेंगे या योग मार्ग अपनाएंगे, जो भी आपका मार्ग हो. लेकिन क्या करना है? हर वक्त समाधि में रहना है. समाधि भी कोई परिणाम परिणाम धारणा ध्यान का परिणाम रूपी समाधि है, लेकिन समाधि एक स्थिति है, और उस स्थिति को ऑल द टाइम, ये नहीं कि 1 घंटा मैं समाधि में बैठ गई या 22 घंटा बैठ गया और बाद में निकल के आ गए. नो, यू बी मेडिटेटिव इज अ स्टेट ऑफ माइंड. चित्त भूमि है, एकाग्र चित्त भूमि है, निरुद्ध चित्त भूमि है. अपनी चित्त भूमि, कम इनटू द हायर कॉन्शियसनेस एंड जस्ट मेंटेन योरसेल्फ on that ekagra niruddha level. So the teacher now is helping the students and persuading them to be in a meditative state, having proximity to the essence of life. Upasa, upasa. Do be with it. Be near the Brahman. Be in proximity of the Brahman, not proximity of the memory. वो ब्रह्मन की स्मृति के साथ मत चलो. जो एक्चुअली हुआ था, जो हुआ था, अकरेंस, हैपनिंग, उसकी याद में मत रहो, उसके साथ रहो. So not proximity to the memory that it had happened in your body, it had happened in your consciousness. This yourness of the body, yourness of the conditioned consciousness is a relative truth. ये जो हमारा चित्त भी है, नॉट ओनली हमारा चित्त जो है, जो अलग अलग भूमिका में बदलते रहता है, लाइक मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, ऐसे वो शिफ्ट होते रहता है. ये जो शरीर है ये कंडीशनड कॉन्शियसनेस है, और ये एक रिलेटिव ट्रुथ है. So what is the difference? I will just remind you, we read about this in Ishavasya Upanishad also and at other places also. So what is the difference between Maya and Sat? क्या फर्क है माया और सत में? माया क्यों कहा गया है? क्या जिंदगी एक माया है? हम कहते हैं ये शरीर माया है, ये मन माया है, तुम्हारा सोचना माया है, तुम्हारा करना माया है. ये माया क्यों कहा गया है इसको? माया को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो इल्यूजन बन गया है. लेकिन अभी चिमटा कोई तुम्हें निकाले तो तुम चिल्लाओगे. तुम्हारे मन को कोई दुख देता है तो दुख होता है. किसी सुंदर चीज को देखकर तुम्हारा मन खुश होता है. इसको माया कैसे बोलोगे? बट सो माया इट का इज, बंधन
सॉरी. वेळेच्या बंधनात आहे ते. हा, पण आपण त्याला वेळेच्या बंधनात आहे हे माहिती आहे, पण का मग ते खोटं आहे का, तो प्रश्न आहे. नाही. नाही. मग तो नाही. खोटा का नाहीये, मग कसं कसं तू त्याला एक्सप्लेन करते. तर एक्सप्लेनेशन एकच आहे. एक सत म्हणजे इटर्नल ट्रूथ, और माया जो है इट इज ट्रूथ. यस ये बॉडी है, यस तुम यहाँ पे हो, हाँ अगर काटा जाए तो खून निकलेगा, हाँ दर्द होने वाला है, हाँ ये सब है, झूठा नहीं है, गलत नहीं है, पर ये रिलेटिव ट्रूथ. किसी का संदर्भ अगर लगाओ तो इसको मतलब बनता है. सो दिस ट्रूथ इज माया इज द रिलेटिव ट्रूथ, एंड सत इज द सच्चिदानंद जिसको बोलते हैं, सच्चित इज द परमानेंट ट्रूथ. The oneness. Sat is some. Yes, Anju. Sorry to I might. interrupt you. No, please tell me, because sometimes I don't have those No, terminology. Sat is something which is present in Yes. all periods of time. Yes. Past, present, and future. Future. Yes, in it's the waking, permanent. sleep, waking, dream, and in the sushupti state. Yes, all जे अवस्था. तिन्ही वेळेमध्ये ऑलवेज प्रेझेंट असतं. हा. Whereas जे इल्युजन असतं ते काय आहे, मिथ्या जे म्हणतो आम्ही इल्युजन, Yes. it is not permanent. It doesn't stay in It is all the temporary. periods of time. It's Yes. temporary. It is Yes. ते विनाश होऊ शकतं. It is finite. Yes. That is why it is called as Maya. That's what Swati said. वेळेचं बंधन. So वेळेच्या And time and सीमेमध्ये. space, yes. Yeah, it's finite. Gurudev would So, always say the Einsteinian world of time and space. You know, yes. the asat, I mean, illusion is always bandhan आहे त्याच्यामध्ये. Yes. Time and Limited. space. It is limited. It is impermanent, and it is ever changing. These are the three descriptions given to the relative truth. तो ये दुनिया जो है ये हमेशा बदलती हुई है, एवर चेंजिंग है, ये क्षणिक है, यानी कि इट इज इम्परमानेंट, और ये रिलेटिव ट्रुथ. So that's how it is described. बिल्कुल. So it has this yourness of the body, yourness of the conditioned consciousness is a relative truth. The absolute truth is different. तो सत्य जो है ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है, और जो जीवन हम जी रहे हैं, ये शरीर, ये मोह, ये जो भी हमारे पंचकोश है, ये सब कुछ जो भी है, ये क्या है, ये बिल्कुल रिलेटिव ट्रुथ है. सो एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड रिलेटिव ट्रुथ, those are the two terms that you use for Maya and Sat. सत को कहते हैं एब्सोल्यूट ट्रुथ, माया को कहते हैं रिलेटिव ट्रुथ. Yeah. So, Aarti, you used three words for relative truth: ever changing, impermanent, and ever changing, temporary, and what did I say? You said ever changing, impermanent, that is temporary only. Yeah. And one more word you used. What? I was about to write. Yeah. Anyway, I'll listen to the recording. It will come. No, it will come. It will come. Ever changing, impermanent, and one more beautiful word you used just now. No, Sorry, that is the relative truth. These are the three words describing relative truth. Yeah. She used three words to describe relative truth. Okay. Spontaneously तुझ्या तोंडावरून आलं, you know. Ever changing, impermanent, and recording में check करेंगे. Recording में check करना पड़ेगा. No, I will remember it and I will tell you. Okay, I just thank you. Thank you. Sorry for the disturbance. No problem. But why is it escaping from my mind? I don't know. But that's okay. Chalo. So anyway, it will come to me. So that's the relative truth, and the absolute truth is different. You and I and thou are that. You might have read in the book by the Jewish philosopher thinker Aham Brahmasmi Tattvamasi Sarvam Khalvidam Brahma. That is the way of the Upanishads of saying the same truth. You are that, I am thou. ये जो भी हम बाइबल में पढ़ते हैं, तो यही बात हम हमारे इसमें, मतलब in the Indian sciences we have said aham brahmasmi tattvamasi sarvam khalvidam brahma. That is the way of the Upanishads. Okay, so that was an explanation of, I think, 4.4
4.6, no, 4.5. Yeah. And then we move on to 4.6. I think I read this sutra again yesterday, but I'll read it again. So yo etadevam vedami hainam sarvani bhutani samvachanti. Okay. So please be in the state of meditation, focusing all the 5 layers and their energies on the indwelling reality. तो अब जो ऋषि है, अब जो गुरु है, वो बच्चे को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुमने क्या करना है, तुमने वो जो ब्राह्मण का अनुभव है, अनुभव भी नहीं बोलना है उसको, ब्राह्मण जिनने खुद को तुम्हें जो दिखाया था, उस ब्राह्मण के साथ रहो, उसके समाधि में रहो. So please be in a state of meditation, focusing all the 5 layers and their energies on the indwelling reality. तो हमारे जो भी पंचकोश है और जो भी ऊर्जाएं हमारे अंदर है, ये सारी की सारी उस सत पे आधारित है. तो चाहे वो हमारा शरीर हो, अन्नमय कोश, चाहे वो हमारा श्वास हो, प्राणमय कोश, चाहे वो हमारा मन हो, मनोमय कोश, चाहे वो हमारी बुद्धि हो, विज्ञानमय कोश, जो भी, या हमारा वट एवर, इमोशनल बॉडी, फिजिकल बॉडी, ऑल द मेंटल बॉडी, जस्ट रेस्ट एवरीथिंग ऑन दैट रियलिटी, ऑन द एब्सोल्यूट ट्रुथ. वो जो अंदर है, देखो 5 कोशों को भी जब दिखाते हैं ना, तो ये बाहर का कोश, फिर दूसरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में दिखाते, तीसरा, चौथा आनंदमय कोश, ये भी एक कोश है, लेकिन उसके अंदर वो आत्मा बैठा. हाँ, तो आनंदमय कोश में आत्मा नहीं है. सबसे निकट अगर आत्मा के पास कोई कोश है तो वो है आनंदमय कोश. Yeah, so a lot of bhakti marg people will also relate to this. You feel that tremendous joy. It's not pleasure. It's a kind of happiness. It's a kind of joy. When you are in that state, you feel closest to yourself or closest to God, whichever you want to say. So please be in the state of meditation, focusing all the 5 layers and their energies on the indwelling reality. A person who does this, a person who lives in the state of meditation, all the 5 layers feeling the proximity of the indwelling reality or essence. If a person lives that way, please do see this. If intellectually you are convinced that there is a reality, and your mind is running away from the sense organs for the transitory pleasures that the external sense organs can bring to you, then there will be a division between intellectual conviction, verbal knowledge, and emotional layer of your being. जब हम पतंजलि योग सूत्र पढ़ते हैं और यम नियम की बात करते हैं ना, तब देखो, आप कोई भी क्लास में या कोई भी पढ़ लो, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान. तो कोई भी टीचर आपको कहेगा ये कायिक, वाचिक, मानसिक, भावनिक हर स्तर पे होना चाहिए. ऑलराइट, सिर्फ इंटेलेक्चुअली है, वर्बली नहीं है, तो ये विरोधाभास आएगा. So if you have understood, even intellectually, if you have understood Brahman, चलो तुम्हें आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन ये ब्रह्मन ये अगर it is an abstract concept, it is an idea that there is a separate permanent reality besides your relative reality, there is an absolute truth. अगर ये तुम मान गए हो कि एक सत्य कोई तो भी है, तो वो सत्य जो है ना, वो तुमने इंटेलेक्चुअली, यानी तुम्हारे माइंड के लेवल पे, तुम बुद्धि के लेवल पे, वर्बली तुम्हारा बोलना, फिजिकली तुम्हारा करना, हर लेवल पे वो सब तुमने जीना. हाँ, विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन कब आता है? जब इंटेलेक्चुअली तो मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, नॉलेज. हाँ, मैंने 4 किताबें, लेकिन मेरे बिहेवियर में, मेरे बोलने में वो सत्य नहीं है.
तो ये हो गया विरोधाभास। तो ऐसा अगर तुमने सत्य को माना है तो सत्य को जीना है, ये बात वहां पे। तो अपने आप जो बाहर के सुख है जिसकी तरफ हम दौड़ते रहते हैं, हमारे इंद्रिय दौड़ते रहती है, आंखें ढूंढती है, कान ढूंढते हैं, कहीं कुछ अच्छा मिल जाए, कहीं कुछ मजा आ जाए, अपने आप ये इंद्रिय रुक जाएंगे, अपने आप उनकी ऊर्जाएं वो स्थित हो जाएगी, जिसको पतंजलि ने प्रत्याहार कहा है। तो वो जो आहार है, वॉकिंग द टॉक, यस एब्सोल्युटली। So whatever you are talking, you have to walk the talk. Very true. So that's how you have to do it. And so your mind, which is running, और मन क्या है, इंद्रिय जहां जाता है मन उसके पीछे भागते हैं, राइट। और फिर हम कहेंगे अहम ब्रह्मास्मि, तो फिर वो विश्वास नहीं होगा उस बात पर। तो ये इस चीज को ध्यान रखना है। All the layers do not get focused, they are energies, and you remember with me that we say they are energies, we are referring to Prithvi, Apa, Agni, Vayu, Akash, etc. We are referring to the 5 principles which are the source of these energies. अब देखो हम ऐसे मोड पे आ गए ना, अभ्यास करते 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 करते, कि अब हमें वो दागिना नहीं दिखेगा, अब हमें वो नेकलेस है, वो बैंगल है, वो इयरिंग है, नहीं, वो जिस धातु का बना है वो धातु दिखेगा। ओके, तो वो कुछ भी, सो व्हाट आई एम सेइंग इज, वो घट उसके उपयोगी वस्तु के हिसाब से हम नहीं देखते, उसके रूप के हिसाब से। यस अंजू, व्हाट Paying attention to the substratum, the द adhisthana, सबस्ट्रैक्ट, यस because everything else is adhyastha on the Brahman, यस superimposed on the Brahman. यस, So when we pay attention to the water and not to या, the waves and the foam and the bubble, but यस, paying attention to the gold and not to the various names and forms, राइट, it really makes a very big difference. Believe एब्सोल्युटली, me, it यस, makes a big difference. yes. Thank you for this wonderful terminology also that you are adding to Anju, because yes, it Um, is the substratum. It is yes, the it is the substratum, the substratum, substance adhisthana. of See, this Adhishta. sambandha, there are various kinds of sambandha, Yeah, what we were taught. yeah. Okay, so but this is a very different kind of a sambandha, that is Hmm. Brahman and जे जीवात्मा आणि परमात्माचं जे Paramatma. आहे Hmm. त्यांचं ते अधिष्ठान आणि अध्यस्त संबंध आहे. Beautiful. सो अधिष्ठान इज असंग असतं. असंग Yes, म्हणजे इट इज व्हेरी डिफरंट. व्हॉट यू yes, टोल्ड अबाउट अन्नमय कोश, yes, अन्नमय कोशाच्या आतमध्ये आहे, बट इट इज नॉट टचिंग द अन्नमय कोश. See, if we, from our limited thinking, if we have to imagine, hmm. सो अन्नमय कोश जे लास्ट कोश आहे त्याच्या आतमध्ये जर आम्ही इमॅजिन करायला पाहिजे की आत्मा आहे, सो बट स्टील इट इज असंग आहे, डिटॅच्ड आहे ते. सो Yes, स्टेइंग अपार्ट, yes, it is as a sakshi, it as is a just Sakshi. witnessing this play of this Yeah, world. absolutely. That is why I use the word concentric. तो ये जो Yes, पंचकोश है ना, constant. ये एक दूसरे को, though everything is connected to everything, and everything, the pranamaya kosh rolls over all of it, but there is still an independent existence of that dimension of that kosha, and atma is separate from all of that. Huh? Even if we refer to Sankhya Darshan, then or if we refer to Mandukya Upanishad, where they say that there is 24 aspects to the physical reality, and then there is the one. The 25th is the Atma. So it is a separate, it's separate truth, the eternal truth, the absolute truth. Yes. So we are so yeah. The point was that अब हम लोग वो मोड़ पे आ गए हैं कि जब हम जो रूप है उसको देखे बगैर हम उसका जो आधार है, अधिष्ठान जिसको अंजू जी बोलती है, तो वो जो है उसको हम देखेंगे। सो दैट वो क्या है, तो वो 5 तत्व है। वो तत्व को हम हर एक चीज के, अभी कुछ दिनों पहले मैंने उदाहरण दिया था कि अगर मुझे गुस्सा आ रहा है तो अब मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कहती हूँ मेरा अग्नि तत्व बढ़ गया, राइट, या बढ़ रहा है। सो वेदर इट इज एन इमोशन, वेदर एनीथिंग टू एनीथिंग, जो भी कुछ है अब हमें तात्विक दिखता है, हमें तत्व में दिखता है। So unless all the layers of the being harmoniously focus their energies, and here focusing the energies for relaxing the movement, not focusing the energies to get an experience,
but they concentrate and make the last effort, the consummation of knowledge, experiencing, going into a state of non-doing, non-knowing, non-experiencing, unconditional total relaxation, not inhibited by any expectation, requires tremendous energy. All right. Somebody was talking to me about ADHD yesterday, and Anandi कुछ इसके बारे में बात कर रही थी, और then I googled the terminology and what it's trying to say and all of that. So these people are the kind who cannot relax at the physical level or mental level or at any level. और यहाँ पे हमारी सारे तत्व जो है, उनकी सारी ऊर्जाएं हैं, हमारे इंद्रिय जो है, शरीर है, मन है, इसको पूरी तरह हरेक स्तर को, हरेक कोश को पूरी तरह रिलैक्स कर देना, सबको शवासन में डाल दो। शरीर सिर्फ शवासन में नहीं है, मन भी शवासन में है, भावनाएं भी शवासन में है, बुद्धि भी शवासन में है, सब कुछ शवासन में है। जब ये होगा टोटल रिलैक्सेशन और कोई अपेक्षा नहीं है, इस स्थिति में आ जाओ। लेकिन ये स्थिति लाने के लिए, टू कंप्लीटली रिलैक्स, कुछ नहीं करने के लिए, नॉन एक्शन, कुछ नहीं जानने के लिए, नॉन नोइंग, कुछ नहीं अनुभव करना है, नॉन एक्सपीरियंसिंग, एंड अनकंडीशनल टोटल रिलैक्सेशन, ये स्थिति लाने के लिए बहुत ताकत लगती है। इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एनर्जी, उसको कहते हैं वाइटैलिटी। हमने स्टार्टिंग में वाइटैलिटी इस शब्द का मतलब उन्होंने समझाया था। ये वाइटल एनर्जी जिसको हम कहते हैं, ये वाइटैलिटी जो है, ये वाइटैलिटी की बहुत जरूरत होती है अगर हमने पूरी तरह शवासन में जाना है तो। इफ ओनली द ब्रेन वांट्स इट एंड द माइंड डजंट वांट इट, इफ द माइंड विशेस फॉर इट बट द बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, then the occurrence of revelation is made impossible by us. शरीर को डाल दिया है शवासन में, मन में बहुत सारे खेल चल रहे हैं, मन में बहुत सारा ड्रामा हो रहा है, नहीं होने वाला। आत्म साक्षात्कार नहीं होने वाला, ब्रह्म की किनार को नहीं छू सकने वाले हम। ओके, सो हर लेवल पे, हर कोश में ये कंप्लीट अनकंडीशनल रिलैक्सेशन होना जरूरी है। So we put obstructions in the path of that happening. यहाँ पे ना, it's interesting. If you listen to her small little words, what she said, that the occurrence of revelation is made impossible by us. मैं उस by को underline करूंगी, क्योंकि हम ही हमारे अंतराय तैयार करते हैं। What Patanjali calls as अंतराय. अंतरायs are व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, विरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध, भूल, अनवस्थित तत्व, ये हम तैयार करते हैं। फिर उसमें से दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप, वो अपने आप हो ही जाता है। ये जो सारी चीजें हैं, ये हम तैयार। तो लोग जब कहते हैं मेरे से नहीं होता, तो फिर देयर इज कुछ नहीं कर सकते। आई कांट हेल्प यू। If you say I can't, then I can't. Nobody can help you. No therapist. Nobody can. 6th chapter Bhagavad Gita uses a word called as Uddharer Atmanan Atmana. That means you have to lift yourself by yourself. By yourself. Nobody else can help. Yes. Correct? Everybody Yes. can give you outside, say, all kinds of external support. But you have to lift yourself. Uddhare Yes. Atmana Atmana. Beautiful that Yes, verse. yes. 6th chapter. Yes, yes. Wonderful. तो वो होना है. If you are not ready, I can't, but I'm going to try. वो तो आना चाहिए. If you're not even ready to try, then nobody can. Right? So at least we have to try to relax. So that's why I tell people, try to relax. Physically relax, mentally relax, emotionally relax. And maintain that relaxation state. फिर कोई आ जाएगा, कुछ बोल देगा, तो वो रिलैक्सेशन में थोड़ा वेव्स आ जाएगा, कोई बात नहीं, इट्स परफेक्टली ऑल राइट। फिर से रिलैक्स हो जाए। अगर अगेन एंड अगेन एंड अगेन वो स्थिति हम लाने की कोशिश करते रहेंगे, तो
ऐसे कभी कभी तो कई दिन चले जाएंगे और जबकि तुम्हें कोई वेव्स या कोई फ्लक्चुएशन नहीं। Yeah? So this is what we put obstructions in the path of that happening. फिर ब्रह्मन अपने आप को कैसे, उसकी कृपा कैसे होगी, वो अपने आप को कैसे दिखाएगा? जब हम गति में है, मूवमेंट में है, हलचल में है, तो वो कैसे अपने आप को दिखा सकेगा? Right? If a person lives in that state of meditation, in proximity to the Brahman or divinity, by all the layers of your beings, the Panchakoshas, then Sarvani Bhutani, all the existent beings, Enam, referring to the person who lives thus in meditation. ये सर्व भूतानी सब जो है ये बिल्कुल तुम्हारे साथ हो जाएंगे, सारे कोश रिलैक्स होंगे, सारे तत्व रिलैक्स हो जाएंगे अगर तुम उस ब्रह्मन के साथ हो। हर कोश पे ब्रह्मन है, शरीर भी रिलैक्स्ड, मन भी रिलैक्स्ड, एवरीथिंग इज रिलैक्स्ड, राइट? सो सर्वाणी भूतानि अभी संवच्छन्ते, as all people love their own being, the indwelling divinity or reality, all beings, all creatures, all expressions of life fall in love with such a being. और जो जो ब्रह्मन के साथ है ना, उसके सेल्फ लव पे कोई डाउट ही नहीं होता। ओके, लविंग योर सेल्फ, ये लव योर सेल्फ बहुत आजकल इस पे किताबें भी लिखी जाती है, that you have to love yourself. What do we mean by self? Most of the books will tell you, love your body, love your mind, love your emotion, love your personality, love your role, that whatever you are playing, most books will talk about that. But that is the lower consciousness. If we want to rise to the higher consciousness, then we have to love the self, the Atma. और उसके लिए प्रयत्न करके कुछ फायदा नहीं है। You cannot try and love yourself. You either love yourself or you don't. Being in awareness of the self is love itself. That itself is love, right? So that is what she's saying over here, that such a person who loves the self cannot hate somebody else. सही है ना बात? जो जान चुका है अहम ब्रह्मास्मि, वो ये भी जान चुका है तत्वमसि। तो ऐसा व्यक्ति होता है, इसके आसपास कोई भी उसका द्वेष करने वाला नहीं आ सकता। कैसे आएगा? जिसका प्यार अनंत है, जिसका प्यार खुद के लिए अलग, दूसरे के लिए अलग नहीं है, सबके लिए इक्वल प्यार जिसके मन में भरा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास द्वेष करने वाले वस्तु व्यक्ति कैसे आएंगे? नहीं आएंगे। As they love divinity, they love such a person. जैसे भगवान पे प्यार करते हैं, वैसा इस व्यक्ति पे वो प्यार करेंगे। They adore such a person. They respect such a person whose life is a demonstration of the finite living in the proximity of the infinite. कैसे जी रहा है ये व्यक्ति? द्वैत में रह के अद्वैत के साथ, फाइनाइट में रह के इंफिनिटी के साथ है, तो इनफाइनाइट के साथ है। तो जिसकी जिंदगी ही एक उदाहरण है, जिसका जीना ही एक उदाहरण है। हाँ, बहुत ऐसे लोग होके गए, जैसे कबीर है या बहुत ऐसे जन, राइट, कि उनका जीना ही, जिंदगी ही उनकी एक द्वैत में रह के अद्वैत के साथ रहने की जो थी। तो द कंडीशन लिविंग इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द अनकंडीशन है सीमितता में, लेकिन असीमित जिंदगी जी रहे हैं, राइट? ऑलराइट, तो यहाँ पे so yes, this point is clear. So we have to remain, our chitta always have to be in the state of niruddha, in awareness of the cosmic consciousness, in awareness of the Paramatma, Brahman, Parabrahman. Now, a reference to Yajnavalkya's dialogue with Maitreyi. थोड़ा सा यहाँ पे वो reference देना चाहती है. I wonder if some of you remember the dialogue between Yajnavalkya and his wife when Yajnavalkya wanted to renounce and become a sannyasi. He wanted to leave his life, Maitreyi, and go away to live the last phase of life as a sannyasi. And the wife asked, "Why are you going away? What are you going to do?"
हाँ, अगर याद हो तो या पता ना हो तो ये जो यज्ञवल्क्य है और मैत्री उनकी बीवी है, अपनी जिंदगी का आखिर के साल जो है, ये यज्ञवल्क्य चाहते थे कि वो सन्यासी चले जाए वन में या जो भी गुफा में, और वो एक सन्यासी की जिंदगी जिए, और उनकी और छोड़कर अपनी बीवी को छोड़कर जाना चाहते थे। तो बीवी पूछती है कि चले क्यों जा रहे हो, जाना क्यों जरूरी है, हाँ चले क्यों जा रहे हो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, वहां पे तो ऐसा क्या करने वाले हो, चले जाकर ये छोड़कर आप वहां पे वैसा क्या करने वाले हो। ही टॉक्स अबाउट सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर यज्ञवाल क्या कहते हैं, आत्म साक्षात्कार करेगा। एंड ही टॉक्स अबाउट इमॉर्टैलिटी, आत्मा अनंत है, और आत्मा आत्मा का के बारे में वो बात करने लगते हैं। सारा कुछ सुन लेती है बीवी, यू नो वाइफ्स दे आर सो स्मार्ट। ओके, एंड देन शी सेज, और वो कहती है, being your wife, won't you share that secret with me? तो वो बोलती है, मैं तुम्हारी बीवी हूं ना, तो तुम मुझे वो जो गुण है, वो जो जाकर आत्म साक्षात्कार मिलने वाला है, वो जो अनंत के साथ एक रूपता होने वाली है, इसके बारे में क्या आप मुझे नहीं समझाओगे। एंड ही अटर्स दोज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैजेस्टिक टीचिंग्स, और उसके बाद वो आत्मा के बारे में जो भी कुछ है ये बताने लगते हैं। नवारे जायाया यः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पित्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। I won't take your time in reciting the whole mantra. The wife is not loved by the husband for the sake of the wife. The wife does not love the husband and the husband does not love the wife because they are mutual objects of pleasure. हाँ, पति पत्नी पे प्रेम करती है, पत्नी पति पे प्रेम करती है, पति पत्नी पे करता है, इसलिए नहीं कि वो पति पत्नी है और सर्टिफिकेट है तो कंपलसरी है, हाँ इसलिए नहीं प्रेम करती। आगे कहा है, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। द पर्सन सीज द रिफ्लेक्शन ऑफ द आत्मन, द इनड्वेलिंग सेल्फ इन द अदर। द ऋषि गोज ऑन, यज्ञवल्क्य गोज ऑन डिस्क्राइबिंग। तो ऋषि कहते हैं कि प्रेम इसलिए है क्योंकि खुद का रूप, जो सामने वाला व्यक्ति है वो एक आईना है, और वो जो है वो उस आईने में उसे दिखता है, वो अपनी ही आत्मा को सामने के आत्मा में देखता है। और यहाँ पे यज्ञवल्क्य कहते हैं, अभी ये इंग्लिश में आ गया, नवा अरे पुत्रस्य कामाय, नवा अरे धनस्य कामाय, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। He says to his wife, everything becomes lovable and we love it not for its sake, but because it reflects the reality of your own being. सच में हमारे मन को वो भाता है जिसमें हम खुद को देखते हैं। You will really love something when you see yourself in it, when you relate to it. हम, what do you mean by using this term relate to it? When you see yourself into it. तो वो यहाँ पे वो कह रहे हैं, आत्मवरे आत्मवरे द्रष्टव्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यास निधिध्यासित्य निधिध्यासित्य। Hence, it is the essence of life, the Atman, the divinity, which should be, about which you should hear, about which you should read, about which you should contemplate, and which should be realized as a fact by you. तो वो कह रहे हैं, मैं जाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मैं हर पल उस आत्मा के साथ रहना चाहता हूँ। सोचूं तो उसका, पढ़ूं तो उसको, देखूं तो उसको, जो भी करूं मैं उस वही करूं। As that passage, some of you have gone through that with me. Let us come back to the Keno Upanishad. The teacher says, if and when a person lives in the proximity of Brahman, now how is this proximity sustained? तो वही बात यहाँ पे ऋषि अपने शिष्य से कह रहे हैं कि ब्राह्मण के सानिध्य में रहना है ऑल द टाइम। सोचो तो ब्राह्मण, बोलो तो ब्राह्मण, सुनो तो ब्राह्मण, जो भी करो तो ब्राह्मण।
So you are doing the cosmic work, you are saying the cosmic words, you are hearing the cosmic words, everything that you're doing is with that Brahman. So ये जो उपासना है, ये जो नजदीक रहना है, ब्रह्मन के नजदीक रहना है, ये संसार में जब हम रहते हैं तो टिका नहीं पाते, सस्टेन नहीं कर पाते। तो हम जब ऐसी कुछ बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ देर के लिए तो बस हम ब्रह्मांड के साथ होते हैं, ऑलराइट, और फिर पति या बच्चे घर आते हैं, या हम कहीं बाहर जाते हैं, और फिर कुछ तो भी होता है और गए, हाँ, गाड़ी की फिसल जाती है। हाउ इज दिस प्रॉक्सिमिटी मेंटेन? तो ये उपासना कैसे रखनी? Because every revelation leaves behind the trace of its happening, and that trace is the energy of awareness. Awareness is not a part of the consciousness. Very interesting, huh, what she's saying over here. I have read this before, that awareness is a characteristic of the consciousness, a quality of the consciousness. Okay, so awareness is not a part of the consciousness. It is not a part of your mind, the conditioned consciousness. Awareness is not a part of the consciousness. It is not a part of your mind. The conditioned conscious, it is not a part of the mind, which is a conditioned consciousness. So what is the mind? The mind is a conditioned consciousness. It is not a part of your biological, psychological inheritance. हमारा ये जो शरीर, हमने अभी बीच में कर्मा पढ़ी थी, राइट? तो हमने देखा कि किस तरह से हमारा शरीर, हमारा मन, ये क्या है? ये हमारा प्रारब्ध है, यानी कि क्या है? ये हमारे संचित कर्म का परिणाम है। What are we? We are a consequence. In the consequence, what you do will create a new consequence for you. परिणाम जो भी जी रहे हैं, एक परिणाम को जी रहे हैं, लेकिन उस परिणाम को किस तरह से जी रहे हैं, इसके हिसाब से आगे का परिणाम तय होगा। इसलिए आज मेरे हाथ में है। हम कहते हैं ना, there is a lot of people discuss a lot of between the difference between destiny and free will, and they say that if there is a destiny, then is there a free will, and if there is a destiny, then how free will operate? Okay, so destiny is a part of our past, what we are today. Free will starts operating in the present with what we are today. So going back to awareness, awareness is not a part of consciousness. It is not a part of your mind, the conditioned consciousness. It is not a part of your biological, psychological inheritance. Self-awareness being the essential characteristic of life, the revelation, the flash of revelation leaves behind it the trace of its occurrence, that awareness. So self-awareness, it is the essential characteristic of life. हम कभी भी भूल नहीं सकते कि हम है. You can never forget that you are. तो जिंदगी का ये गुण धर्म है, ये बेसिक गुण धर्म है, अवेयरनेस. हर कोई जानता है कि वो है, चाहे वो प्राणी, पशु, पक्षी, सजीव, निर्जीव, सब जानते हैं कि वो है. ये जिंदगी का एक बेसिक गुणधर्म है. या easiness, the easiness or the amness. Yes, Amness. amness I or am. I am or I is. So it becomes a isness, which is the present tense, and I am, मैं हूँ, ये कोई नहीं भूल सकता, राइट? जब वो आत्म साक्षात्कार होता है, वो ब्रह्मन की कृपा जब होती है ना, तो वो पीछे उस सजगता का, उस अवेयरनेस का एक गंध छोड़ जाता है, जो तुम्हारे से कभी नहीं भूला जा सकता. It's sort of that scent, that the scent of that essence. It stays with us constantly, never to be forgotten. All right. So ye jo that awareness, the flash of revelation leaves behind it the trace of that occurrence, that awareness. Not that person is aware of the happening. हाँ, मुझे ये अनुभव हुआ था, वो अवेयरनेस नहीं. जो हुआ था
उसका अवेयरनेस. ऑलराइट, सो दैट विल बी अ मेंटल गेम, दैट विल बी अ मेमोरी. अगर जो मेरे साथ जो हुआ था वो अगर तुम बोल रहे हो तो वो स्मृति हो गई, लेकिन जो हुआ उसको तुम कभी नहीं भूल पाते, ये हो गई कॉन्शियस अवेयरनेस. फर्क ध्यान में आया? या ममता, इज इट क्लियर? राइट. So that will be the mental game, that will be the memory. That awareness has no subject. तो वो जो भी कुछ हुआ उसका कोई विषय नहीं है कि जो हुआ वो अलग और मैं अलग, वो ऑब्जेक्ट और मैं सब्जेक्ट. मैंने वो होते हुए देखा, मेरे साथ वो हुआ नहीं, वो और मैं, वो जो होना था, that occurrence, that happening and me are not different. I am that. All right. So that awareness has no subject. It hasn't got the center in the brain or the thought structure. तो ये उसकी कोई वो स्मृति में कहीं तो भी एक जगह है जहां पे वो जो हुआ था वो जाके बैठ बैठ जाता है और वो एक स्मृति बन के रह जाता है. नहीं, बस एक सजगता का गंध ऑल द टाइम हमारे साथ रहता है. और वो जो है ना गंध, वो जो फीलिंग है, वो जो अवेयरनेस है, इट वाइब्रेट्स इन द होल बीइंग. वो सिर्फ स्मृति में या मन में नहीं है, वो हमारे कण कण में रहता है. वो ऊर्जा जो है, उसका जो अनुभव है, उसका वाइब्रेशंस जो है, ये हमारे पूरे कण कण में होता है. एज लाइफ पल्सेट्स थ्रू यू एंड मी. In the big toe there is life, in the crown of your head there is life, everywhere there is life inside you. The light of life, the heat of life, the sound of life, the movement, the motion of life encased in your body is the pulsation of your life. So beautifully she has said this. हाँ, क्या पैर के अंगूठे में जीवन है और कान में नहीं है? हाँ, राइट हैंड में है, लेफ्ट हैंड में नहीं है. Life is in each and every cell of our body, in each and every part of our body, and it pulsates. आज मेरा सर जी रहा है, कल हाथ जी रहा है, परसों पैर जी रहा है, नहीं, सब कुछ धकधकता है, सब कुछ जीवित है. उसी को जीवन कहते हैं. वो जीवन की ऊर्जा है, वो जीवन का तेज है, उसको चैतन्य भी कहते हैं. हाँ, उसको लाइट कहते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं. Yeah, so that is life, and that awareness of the occurrence of the Brahman, that becomes the light, that becomes the heat, that becomes the light. It becomes a part of you. ये नहीं कि again this is, ये नहीं कि भाई कभी कभी होता है, कभी कभी महसूस होता है, कुछ कुछ महसूस होता है, फिर बाकी टाइम नहीं होता. नहीं, all the time it is there. Yeah. So when a person lives in that dimension, yeah. So when a person lives in that dimension of awareness, which is a non-personal phenomena, so important, these words that she speaks for us to understand them. It's not non-personal. ये मेरा अनुभव, exclusive experience नहीं. ये occurrence है, ये happening है, ये personal नहीं है. ये बस ब्रह्मांड ने अपने आप को दिखा दिया. Right? So when a person lives in the dimension of awareness, which is a non-personal phenomena, it is a cosmic energy, it is the supramental energy, it is the supreme intelligence. Then all creatures, the moment they lay their eyes upon the person, they seek the proximity. ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्मांड के सजगता के साथ जीता है, उस पर नजर भी गिर जाए ना, या तो मैं तो कहूंगी कि उसके ऑरिक फील्ड में जो भी आ जाए ना, उनको वो महसूस होगा. कहेंगे सत्पुरुष आए, पुरुष आए हैं, कहेंगे सदगुरु आए. We get sucked into it. We get sucked into it. Yeah. And some of them carry an auric field of like miles together, and it affects everyone. इनकी तरफ द्वेष किसी के मन में फील वो भी नहीं, कुछ नहीं, उनके तरफ कोई नेगेटिविटी. So supreme intelligence, then all the creatures, the moment, फिर वो चाहे पशु ही क्यों ना हो, वो चाहे प्राणी क्यों ना हो, वो चाहे वृक्ष क्यों ना हो,
सब उसी की तरफ अपने आप झुकते जाएंगे. Like she said, you get sucked into it. Yeah. So they lay their eyes upon the person, they seek the proximity, they love, they adore, they respect. प्रेम महसूस करेंगे, रिस्पेक्ट महसूस करेंगे, not because the person has achieved something, इसलिए नहीं कि उनको आत्म साक्षात्कार हुआ है, but the person has been an opportunity for the revelation of the cosmic truth. इंद्र इंद्र का राजा है, इंद्रियों का राजा है, इसलिए क्योंकि वो पात्रता उसने पाई है कि वो ब्रह्मांड का अनुभव कर सके, वो यक्ष के निकट जा सके, क्लोज टू द ब्रह्मांड. Yeah. If you are not too tired, let us proceed. But I think we will not proceed. I will just finish this paragraph and then we will stop over here. If you are not too tired, let us proceed to the next mantra. We are now coming to the end of the Upanishad, Keno Upanishad, and hopefully we might complete it tomorrow. ऐसा वो कह रही है, हमें 2-3 दिन लगेंगे. We will be reading. Yeah, in the next 2-3 classes, I think we will also come to an end of this. So beautiful. Such amazing perspective. She is too good. Too good to be true. And today you were talking about fragrance, na? Yes. When I attend, like from Wednesday to Saturday, I have classes every day. Like your class is there every day. Yeah. Wednesdays, I have my study group, and Thursday to Saturday, I attend Mandukya and Bhagavad Gita Okay. from by a senior Rotarian. Okay. So, like, you know, as you mentioned about the fragrance, all my whatever Swamiji had talked about in the class, the fragrance of that, fluttering everywhere. It becomes so alive, you know, so alive. Oh my God, thank Yes. you so much. Today it was very nice. It was really amazing. And what is fantastic is that she explains why we are not able to do it. And then she tells us what we should do to be able to do it. So there is, the problem is described, the solution is given, and the description of it is given. See, this is how you are going to. ये वो उसने बता दिया. तुरंत अंजू आपने relate किया कि yes, that is how I feel, the way she is describing. And the best part for me, my takeaway is like I can relate it to because maybe I have studied recently the Upanishads and Bhagavad. Immediately वो connection आता है, ये भगवद गीता का ये verse था. Yes. Because and what you told about Shrotavya Gantavya, this was that Taittiriya Upanishad का जो आपने पढ़ा ना, Yajnavalkya and Maitreya का. Yeah. That was a very famous, well quoted verse by Swamiji's. I mean, everywhere. Like even in Bhagavad Gita, there are certain verses like Karmanyeva Adhikaraste, Tadviddhi Pranim. These are commonly quoted verses, you know, in every way. So this particular Shrotavya Gantavya was a very commonly quoted verse. Repeated again by and Swamiji. again. Repeated again and again, they would repeat in the class. Okay. All right. So यही होता है कि so so that is a fantastic idea, Anju, that for a whole year you went in for that study. And I can understand now why you said, you know, one must go for a whole year and study. And then we bring ourselves, पात्रता बनती है कि हम उसमें रहने की जो क्षमता है, increase the capacity. एक वीक का जो सत्संग या हम लोग कैंप वगैरह जाते हैं, it is so short a duration that it doesn't you sustain. Really, it doesn't sustain. Yeah. Only when you are there with these realized masters bolo, ya gurus bolo, ya swamis bolo, their aura catches on to you. And you're hearing it, you're thinking it, you are speaking it, or everything at all levels. That is the only thing what is going on. And that is what is being continued even today, at least with me. I don't know about others. But I know certain few sadhaks of my friend sadhaks, you know, who are completely into it. Right. Completely. मेरा भी दिमाग सिर्फ इसी में घूमता रहता है.
all Like the time. even while cooking, even while cooking, now cooking has become such a meditative process for me. Right. It's become a real meditation for me, you know. I Wonderful. keep on wondering that it's beautiful. It's beautiful, Aarti. Every I aspect personally, of life will become that way, na? oh yeah, Every it's so aspect. beautiful. Everything Every becomes wherever we look, na, it's only vibhuti we see of God. So beautiful. all cosmic energy, all of it. Yes, absolutely, Beautiful. absolutely. Thank you. Yes. Yes. Thank you, Anju. And thank you, friends. So we will just stop over Thank you here. so much. Hari Om, And Hari Om. I will see you on Monday. Huh? Yeah. Next